Hello everyone. Sage Group and SIRTS Civil Department welcomes you to this online class of Transportation Engineering 1. Today we will study the topic loading on bridges. So loading on bridges. A bridge is to be designed for the worst effect produced by various forces, loads and stresses which are acting on it simultaneously. So we have to design a bridge for the worst condition. Okay. तो वर्स्ट कंडीशन जो आती है वो वेरियस लोड स्ट्रेसेस जो भी एक्ट कर रहे हैं ब्रिज पे, तो उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं ब्रिज को. ठीक है, हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया जाता है वो वर्स्ट इफेक्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है. ओके, सो द लोड ऑन द ब्रिजेस आर पार्शली इम्पोज्ड बाय द व्हीकल एंड द यूज़र एंड पार्शली बाय द नेचर. द स्टैंडर्ड्स हैव now been laid down all over the world both by the railways and highway department for various loads on bridges. Okay, so the railway department and highway departments have different codes for the various loads on the bridge. For highway bridges, the standard specification are contained in the Indian Road Congress Bridge Code, and for railway bridges the Indian Railway Standards. तो जो हाईवे ब्रिजेस हैं उसके लिए जो हम ब्रिज के कोड यूज़ करते हैं वो IRC ने हम उन्हें प्रोवाइड कराया है. ठीक है, तो इंडियन रोड कांग्रेस का ब्रिज कोड है वो फॉर हाईवेज हम यूज़ करते हैं, हाईवे ब्रिजेस के लिए यूज़ करते हैं. और रेलवे ब्रिजेस के लिए हम IRS कोड का यूज़ करते हैं, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड कोड का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द फॉलोइंग आर द वेरियस फोर्सेस, लोड्स एंड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन अ ब्रिज. First one is buoyancy pressure, second one is centrifugal forces, third one is dead load, fourth one is deformation stresses, fifth one is the earth pressure, sixth one is erection stresses, seventh one is impact load, eighth one is live load, ninth one is longitudinal load, 10th is the secondary stresses, 11th is the seismic load, 12th is the temperature variation forces, 13th is water pressure, 14th is wind load. These are the 14 types of load or stresses that are acting on a bridge. Okay, we will study all these one by one. First one is the buoyancy pressure. The effect of buoyancy is considered in the design of the bridge only if the strata of the soil are permeable, or in other words, if the bridge foundation are resting on a homogeneous and impermeable strata of soil. On provision is made for buoyancy in the design of bridge. तो बायंसी प्रेशर कब हम कंसीडर करते हैं, जब जो हमारी सॉइल है वो परमिएबल है. परमिएबल सॉइल होने की वजह से जो वाटर होता है वो सीप करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्या लगाता है वो बायंसी प्रेशर लगाता है. तो उस कंडीशन में जब सॉइल परमिएबल है तब हमको क्या है ब्रिज डिज़ाइन में बायंसी प्रेशर को कंसीडर करना होता है. सेकेंड वन इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. When a road or a railway bridge is situated on a curve, the effect due to centrifugal force is to be considered in the bridge design. जब रोड या रेलवे ब्रिज कर्व में सिचुएटेड है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको ब्रिज डिज़ाइन में कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन में आता है जब कर्व में ब्रिज बना होता है. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो फोर्स जो व्हीकल को क्या करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करता है ड्यू टू द इट्स टर्निंग इफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द डेड लोड. द डेड लोड इंडिकेट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ. ओके, तो डेड लोड वो लोड होता है जो पूरे स्ट्रक्चर का खुद का जो वेट होता है, जो लोड होता है वो कहलाता है डेड लोड. इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज लाइव लोड टू बी कैरिड, length of span, working stresses adopted in the design. It has to be initially assumed for the design purpose. Okay, following two rules are followed, which are these. First one is dead load of the structure is assumed by reference to suitable empirical formula or by comparison to similar existing structure. Second one is after a design is finalized, the actual weight of structure is worked out. If there is appreciable difference between the actual and the assumed dead load, the design is revised accordingly. तो जो डेड लोड है किसी भी स्ट्रक्चर का वो लाइव लोड पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्पान पे डिपेंड करता है, वर्किंग स्ट्रेसेस जो अडॉप्ट कर रहे हैं हम डिज़ाइन में उसमें वो डिपेंड करता है.
और जो डेड लोड होता है इनिशियली हमको क्या करना होता है, डिज़ाइन में एज्यूम करना होता है। तो दो मेथड्स हैं, दो रूल्स हैं जिसके यूज़ करके हम क्या करते हैं, डेड लोड को हम एज्यूम करते हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें ये रहता है कि जो डेड लोड है उसको हम एज्यूम करने के लिए जो सेम तरह का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं तो सेम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से हम कंपेयर करते हैं अपने जो स्ट्रक्चर जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम बनाएंगे उसके लिए वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड मेथड एंड सेकंड रूल इज़, जो डिज़ाइन जब फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो तब क्या करते हैं, एक्चुअल वेट जो स्ट्रक्चर का है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और जो हमने एज्यूम किया है डेड लोड और जो एक्चुअल लोड आ रहा है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या करते हैं, हम डिज़ाइन को रिवाइज कर लेते हैं। नाउ सम एम्पिरिकल formulas are used for design of the bridge structure. It is the Unwin's formula which are used for the bridge structure, and W is weight is W is given as P into L into R divided by 2 CF minus LR, where W is the weight of one span in tons excluding weight or cross girder and flooring, and P is the load to be carried in tons, L is the span in meter, R is the ratio of span to depth, F is the working stress in tons per centimeter square, and C is the constant which varies from 12 to 1400 for plate girders and from 17 to 1900 for trusses. So by using this formula and putting these values, we can calculate the dead load of the structure for one span. Okay. Now next stresses is the deformation stresses. Any bending stresses which is developed in a steel member either due to vertical deflection or rigidity of a joint is termed as deformation stress. The deformation stresses are to be taken into consideration for steel bridges only. तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेस हम जनरली स्टील ब्रिज के लिए ही कंसीडर करते हैं। और ये होता क्या है, तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस है जो किसी भी स्टील मेंबर में डेवलप होता है, किसके द्वारा, जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन आता है या रिजिडिटी होती है जॉइंट की, उसके कारण जब लोड आता है तो क्या होता है, वहाँ पे डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेस जनरेट होता है। ओके, अब नेक्स्ट वन इज द अर्थ प्रेशर. The component of bridge which are required to retain earth should be designed for suitable earth pressure. Okay, the position of live load on earth causes pressure which is known as live load surcharge, and it should be properly considered in the design of bridge. अब जो ब्रिज का पार्ट सॉइल को रिटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे हमारी विंग वॉल होती है, वो अर्थ प्रेशर के लिए डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। और उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, अर्थ प्रेशर को डिज़ाइन ऑफ ब्रिज में शामिल करना पड़ता है और कंसीडर करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेसेस इज द इरेक्शन स्ट्रेसेस. व्हेन द स्ट्रक्चर इज बीइंग इरेक्टेड सम स्ट्रेस इज लाइकली टू ऑकर इन इट्स वेरियस मेंबर. द इरेक्शन stress should be checked, and if it is not within the permissible limit, adequate provision should be made in the design for offering resistance to it. अब कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रिज स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं कि प्री कास्ट हम मेंबर्स का यूज़ करते हैं, जो हमने इंडस्ट्री या फिर हमने कुछ चीज़ें क्या है कि प्री कास्ट किया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है मेंबर को, और उसको हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं साइट पे। लेकिन उस समय हमको इरेक्शन स्ट्रेसेस का ध्यान रखना होता है, और हमारा जो इरेक्शन स्ट्रेसेस है वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और हमें सुटेबल प्रोविज़न इतना अडॉप्ट करना होता है कि डिज़ाइन में कि वो जो रेजिस्टेंस है जो इरेक्शन स्ट्रेसेस के द्वारा वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, और उसके कारण कोई भी नुकसान ना आए ड्यूरिंग द इरेक्शन, ठीक है।
हमारा जो भी मेंबर को इरेक्ट करना है, मतलब उसको एक प्रॉपर पोजीशन में असेंबल करना है, ठीक है, तो उस समय हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इरेक्शन स्ट्रेसेस उस समय भी आता है जब हम क्या करते हैं, पाइल्स वगैरह भी मूव कराते हैं ग्राउंड में, उस समय भी इरेक्शन स्ट्रेसेस आते हैं, तो उनका हमको ध्यान रखना होता है ब्रिज डिज़ाइनिंग में। ओके, नाउ इम्पैक्ट लोड, the stresses developed due to fast moving heavy vehicles over uneven surface in case of road bridges or due to trains moving over uneven rails in case of railway bridges are known as stresses due to impact। अब impact load क्या होता है, जब कभी भी एक फास्ट मूविंग व्हीकल जो है, ठीक है, जैसे रेलवे ब्रिजेस के केस में जो ट्रेन है वो मूव करती है रेल पे, और रोड ब्रिजेस के केस में हैवी व्हीकल्स मूव करते हैं, तो जब वो मूव करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेसेस आता है, और जो स्ट्रेसेस मूवमेंट के कारण आ रहा है वही इम्पैक्ट लोड कहलाता है, ठीक है। अब नाउ द प्रोविजन मेड इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रिज फॉर इम्पैक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड स्ट्रेसेस। ओके, सच अ फ्रैक्शन इज टर्म्ड एज द इम्पैक्ट फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट लोड आ रहा है वो हम हमेशा लाइव लोड के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं, और उसके बाद हम जो ये फ्रैक्शन आता है इसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है ये। तो फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर अ इम्पैक्ट फैक्टर फॉर रोड ब्रिजेस, इंडियन रोड कांग्रेस फॉर IRC क्लास ए और क्लास बी लोडिंग। द इम्पैक्ट factor is given as I is equal to 4.5 divided by 6 plus L. It is for the RCC bridges of span less than 3 meter with a maximum value of 0.5. Okay, maximum value of I can be 0.5. And another formula is I is equal to 9 divided by 13.5 plus L for steel bridges of span less than 3 meter with a maximum value of 0.545. Here I is the impact factor and L is the span in meter. By using these empirical formulas, we can determine the impact factor. When the span exceeds 45 meter, the impact factor for RCC bridges and steel bridges are taken respectively as 0.088 and 0.154. For railway bridges, it is for the road bridges. Okay, and now for the railway bridges, Indian Railway Board has given the value of the impact factor. It specified now is based on the extensive test carried out by the Indian Railways, and it is applicable for speed up to 160 kmph on broad gauge and 100 kmph on meter gauge. So it is denoted by small I. The value of small I is given as, it is a factor, its value is given as 0.15 plus 8 divided by 6 plus L, where L is the loaded length of span in meter for the position of the train giving maximum stresses in the member under consideration. Then the value of impact factor I is given as x into small I, where x is the multiple whose value is given in table as seen on the screen. For narrow gauge track, value of impact factor is given as 91.5 divided by 91.5 plus L. And in this table the gauge is given, broad gauge and meter gauge. Description about it is given, value of x in one column, value of x is given, in another column maximum value of I is given. So by using this table we can determine different values of x and I for different track conditions. Like for single track, value of small x is 1 and maximum value of I can be 1. Okay. For main girders of double track span with two girders, value of x can be 0.72 and value of I is 0.72. For intermediate main girder of multiple track span, the value of x is 0.6 and value of capital I is 0.6. The cross girder carrying two or more tracks, value of small x can be 0.72 and value of impact factor can be, maximum value of impact factor can be 0.72. So by this equation and by these conditions we can determine the impact factor and impact stresses. Okay, now next load is the live load.
it is evident that maximum live load will depend on the situation of the structural member under consideration. In practice, the standard loading are framed for convenience in the design of bridges. Okay. तो जो लाइव लोड है वो एक तरह का वो लोड होता है जब किसी भी मूविंग व्हीकल्स के कारण या मूविंग पेडिस्ट्रियंस के कारण जो लोड आ रहा है, ठीक है, वही कहलाता है क्या, लाइव लोड। तो लाइव लोड के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, आईआरसी कोड और आईआरएस जो है उसके कोड से हम क्या करते हैं, लाइव लोड की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन के लिए डिटरमाइन करते हैं और उसके बेस पे ब्रिज डिज़ाइन आगे किया जाता है। So now the following are the some standard loading for IRC recommendations. IRC has revised the old standard to meet with the requirement of modern traffic. As per revised IRC recommendation, the loading are divided into following 4 categories. First one is the class AA loading, and B is the class A loading. Next one is the class B loading and class 70R loading. These are the 4 categories in which IRC has divided the loading conditions. Okay, depending upon the traffic, depending on the loading on the bridges, these loads are can be anyone can be selected for the further design. For railway bridges, in the Indian Railway Board, Ministry of Railway, government under the Government of India has specified the standard of live loading to be adopted for 3 different gauges, namely broad gauge, meter gauge and narrow gauge. Okay, the IRS bridge rules contain various standards in detail, and they also furnish tables giving the equivalent uniformly distributed load in tons on each track and also the impact factor applicable for different spans. तो रेलवे ब्रिजेस में क्या है, इंडियन रेलवे बोर्ड ने क्या करा है, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया है, ठीक है, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें गिवन है लाइव लोड की फॉर डिफरेंट गेजेस. फॉर ब्रॉड गेज इट इज डिफरेंट, फॉर मीटर गेज इट इज डिफरेंट एंड फॉर नैरो गेज इट इज डिफरेंट लाइव लोडिंग कंडीशंस. एंड IRS bridge rule is adopted for, and tables is given in the IRS bridge code for EUDL, means uniformly equivalent uniformly distributed load in tons. Okay, so by using these codes we can determine the live load. Okay, next one is the longitudinal forces. It is necessary to make suitable provision in the design of the road bridge or railway bridge for the longitudinal forces which develop from any one of the following causes. What are these causes by which longitudinal forces get developed? First one is the braking effect resulting from the application of brakes on the vehicle. Okay. Second one is the frictional resistance offered to the movement of free bearing due to variation in temperature or any other causes. Third one is the tractive effort caused through the acceleration of driving wheels of the vehicle or locomotive. These are the 3 causes due to which longitudinal forces develop. तो longitudinal forces जो है ब्रिज डिज़ाइन में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है. अब ये किसके किसके कारण हो सकता है? पहला है ब्रेकिंग इफेक्ट के कारण हो सकता है, ठीक है. जब ब्रेक अप्लाई होता है, जब व्हीकल मूव कर रहे हैं वो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं सडनली, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या करता है, एक फोर्स लगता है, वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स रहता है. अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी, जब फ्री बेयरिंग्स क्या है, जो बेयरिंग्स होती हैं जहाँ पे सपोर्ट होता है वहाँ पे बेयरिंग प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है. अगर फ्री बेयरिंग है, ठीक है, फ्री बेयरिंग में अगर कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वहाँ पे, तो उसके कारण भी और टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी क्या हो सकता है, वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जनरेट हो सकता है. अब ट्रैक्टिव एफर्ट जो आ रहा है, जब ड्राइव व्हीकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो व्हील्स मूव करते हैं उसके साथ, तो उसके कारण जो ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट होता है उसके कारण भी कई बार लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट होते हैं, उसको हमको कंसीडर करना पड़ता है इन द डिज़ाइन ऑफ द ब्रिज. Next one is the secondary stresses. In case of RCC structure, the following stresses are developed due to the following causes. First one is deformation of certain members. Okay. Second one is the movement of the support. Third one is shrinkage in concrete. Fourth one is the time yield in concrete. तो secondary stresses वो stresses है जो कुछ रीजन के कारण जनरेट होते हैं, जैसे कुछ मेंबर्स में डिफॉर्मेशन आ गया, सपोर्ट में थोड़ा मूवमेंट हो गया, श्रिंकेज हो गया कॉन्क्रीट में, ठीक है, यील्डिंग हो गई कॉन्क्रीट में,
तो इसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट होता है. In case of steel structures, the secondary stresses are developed due to following causes. What are these? First one is the application of load at intermediate point in a level. Second one is the cross girder being connected away from the panel point. Third one is the eccentricity of the connection of the floor and beams. Fourth one is the effect of wind load on end post of through bridges. Next one is the moment of the support, etc. These are the causes due to which secondary stresses develop in the steel bridges. Okay, in steel structures, these are the causes for the development of secondary stresses. The bridge should be designed and constructed in such a way that the secondary stresses are brought down to minimum level. तो हमको हमेशा ब्रिज ऐसा बनाना चाहिए कि जो कॉजेज़ हैं इसको ओवरकम कर पाएँ, और दूसरी चीज़ है जो ये सेकेंडरी स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं इसको हम मिनिमम लेवल पे रख पाएँ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द सेस्मिक लोड. When a bridge is situated in a locality which is likely to be affected by earthquake, necessary allowance is to be made in the design of bridge for seismic load. Okay, seismic load means earthquake load. And while designing we have to consider this if the bridge is in the severe earthquake zone like zone 4 or zone 5. Okay, the bridge is provided with structural features which are capable of resisting the effect of earthquakes. The seismic load is taken as the horizontal force equal to certain percentage of weight of the structure. The equation to find out the lateral force due to earthquake is as follows, and by using this formula we can determine the lateral force. Formula is S is equal to small x into W, where S is the lateral force due to earthquake, small x is the seismic coefficient for the region, capital W is the weight of mass under consideration ignoring reduction due to buoyancy or uplift. So by using this formula we can determine the horizontal force. Okay, the lateral force. तो अर्थक्वेक जो है जिसको हम सेस्मिक लोड भी बोलते हैं, अर्थक्वेक लोड भी बोलते हैं, लोड ड्यू टू अर्थक्वेक. ठीक है, तो उसको हमको ब्रिज डिज़ाइनिंग में कंसिडर करना पड़ता है, और उस केस में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर है ब्रिज का वो लाई कर रहा है सीवियर अर्थक्वेक जोन में. जैसे अर्थक्वेक जोन 4 और 5 जो होते हैं वो सीवियर होते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक को कंसीडर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और उस केस में हमको ब्रिज डिज़ाइनिंग में इस चीज़ को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन करना पड़ता है ब्रिज को. ठीक है. नेक्स्ट वन देयर टेम्परेचर वेरिएशन फोर्सेस. ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ मेंबर एंड द स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड. If the change in the length of member due to variation in temperature is restrained, the temperature stresses are developed. तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस कब आते हैं? जब हमारा मेंबर क्या है मूवमेंट के लिए हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, अगर वहाँ पे रिस्ट्रेंड है मेंबर तो वो क्या करेगा, वो मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस उसका जो कोफिशिएंट है अगर वो ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, उस जो वहाँ पे टेम्परेचर है एक्चुअल में जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, तो मेंबर क्या करेगा अपनी पोजीशन से, जब ड्यू टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन वो क्या करेगा, श्रिंकेज या तो एक्सपांशन होगा, और उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. और जहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हमको टेम्परेचर वेरिएशन फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है. नाउ वाटर प्रेशर. The portion of the bridge which is submerged in running water is designed for horizontal forces of the water current. Okay, the water pressure is calculated by considering the hydraulic principle. तो hydraulic principle का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर प्रेशर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब जो पोर्शन ब्रिज का क्या होता है, सबमर्ज होता है. ठीक है, जो पानी में डूबा हुआ है जो पोर्शन, जैसे पियर होता है आपका, अबैटमेंट है, और दूसरे पोर्शन हैं उसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल फोर्सेस लगते हैं वाटर करंट के, तो वहाँ पर हमको हाइड्रोलिक प्रिंसिपल का यूज़ करके उसको वाटर प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ द वाटर प्रेशर. एंड नेक्स्ट वन इज़ द विंड लोड.
So what is wind load? Wind load is directly proportional to the square of the velocity, and it is expressed as P is equal to K into V square, where P is the wind pressure in Newton per meter square, V is the velocity of wind in kmph, K is the constant which depend upon the meteorological condition, nature of the surface exposed to wind. तो विंड लोड जो होता है वो जब हमारा ब्रिज स्ट्रक्चर एक ज़्यादा हाइट पे है तो वहाँ पर क्या होता है, विंड फोर्स एक इम्पॉर्टेंट लोड होता है जिसको हमको कंसीडर करना पड़ता है ब्रिज डिज़ाइन में। और जो विंड लोड आती है वैल्यू, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं विंड प्रेशर की। एक फैक्टर है के जो कांस्टेंट है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड, और वेलोसिटी ऑफ विंड is multiplied twice. Okay, so wind pressure is calculated by multiplying the constant and square of the velocity. Okay, so इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, विंड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। और ज़्यादातर केस में क्या होता है, विंड लोड या तो अर्थक्वेक लोड, दोनों में से एक ही कंडीशन जो सीवियर है उसको हम कंसीडर करते हैं जब हम कोई किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। दोनों को एक साथ हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ कंसिडर करेंगे तो हमारा जो ब्रिज है वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। और ये हमको ध्यान रखना होता है एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। ओके, सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट लोडिंग ऑन द ब्रिजेस. We have discussed the 14 different types of loads or stresses. Okay, so thank you.